Hello everyone, I am Nikita Uttam Chandani. I welcome you all in my channel Learnify Me. I hope you all are having a well of time. On that note, I would start our session, and that is the third poetry of grade 9 Beehive English textbook, that is Rain on the Roof, Coach Skinny, written by Coach Skinny. And before we understand this poetry, I have a riddle for you all. That is, what is full of holes but still holds water in it? Do not forget to write the answers in comment section below. Alright, let us study about the poet who wrote this. That is Coach Skinny. He was born in 1826, died in 1904. He was an American lawyer, soldier, orator, politician, journalist, and the poet who wrote, of course, Rain on the Roof. He has written this book that is lyrics of the ideal and the real. If ever the description, the man had a full life, could be leveled at someone, then that man would have to be Coach Skinny. During 19th century, he was at various times a wistful and skillful poet. For a short time, he was politician, filling the role of senator in the state of Ohio for 2 years. He was a lawyer in Cincinnati, it is a city in Ohio, and worked as a journalist on several publications and newspapers. He served in the U.S. Army during the American Civil War as a commissioned officer, achieving the rank of lieutenant colonel in the appointment of paymaster. Finally, he held several school teaching posts too in Ohio itself. Talking about his personal life, he was twice married, and his second wife bore him three daughters. This is the home where he lived. Now, let us understand the poem. This poem is this big, okay? It is this much big, but in our syllabus, it is still here, the three stanzas. So first we shall enjoy the poetry first, and then we will understand stanza by stanza. Let us enjoy this poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a joy to press the pillow of a cottage chamber bed, and to listen to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy beings start, and 1,000 recollections weave their bright hues into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in fancy comes my mother, as she used to years agone, to survey her darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I see her bending over me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Then my little seraph sister, with her wings and waving hair, and a bright-eyed cherub brother, a serene angelic pair, glide around my wakeful pillow, with their praise or mild reproof, as I listen to the murmur of the soft rain on the roof. And another comes to thrill me, with her eyes delicious blue, and forget I, gazing on her, that her heart was all untrue. I remember but to love her, with rapture keen to pain, and my heart's quick pulses vibrate to the patter of the rain. That there's not in art's bravos, there's not in art's bravos that can work with such a spell, and the spirit's pure deep fountains, whence the holy passions well, as that melody of nature, that subdued subduing strain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. It's a beautiful poem. Now let us understand stanza by stanza. Let's look at this. What does the poet is telling us, and what the poetry is about? The poem tells us what the poet feels about when it is raining. It's a sweet, bitter feelings which are put together in this stanza. There's a healing power in the falling of the rain on the roof when one hears it falling, lying in a cozy bed. The poet feels that it's a pleasant experience to live and sleep comfortably in a cottage on a rainy night,
वो जब अपने बेडरूम में सो रहा है और जो बारिश गिरती है तभी जो पैटर पैटर साउंड होता है, वो एट द सेम टाइम वो अपना एक हीलिंग पावर है वो साउंड में. दैट्स व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से. ये पोएट्री पूरी की पूरी वही चीज पेन डाउन कर रही है. द फॉलिंग ऑफ द रेन ब्रिंग्स ड्रीमी इमेजिनेशंस एंड वी स्टार्ट रिकलेक्टिंग सम सूदिंग एंड प्लेजर गिविंग मेमोरीज. द पोएट गोज बैक टू हिज चाइल्डहुड एंड रिमेंबर्स हिज मदर. उसकी मम्मी के साथ बिताई हुई जितनी भी यादें थी. सो बेसिकली इट्स अ नॉस्टैल्जिक पोएम. नॉस्टैल्जिक मीन्स कि यादों में, यू नो, यू आर डाउन इन द मेमोरी लेन. दैट्स कॉल्ड बीइंग नॉस्टैल्जिक इनफ. तो ये ना अपनी यादें पेन डाउन कर रहे हैं पोएट यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम अपनी जो साउंड है उसी साउंड को वो कैसे हीलिंग पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग which is written here. So let us understand the first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lies listening to the patter of the soft rain overhead. जब पोएट जो है वो बेड पे सो रहे होते हैं, तो ये जो रूफ है, कहते हैं when the humid shadows hover. humid मतलब क्या होता है? मॉइस्ट, मॉइस्चर वाले पानी से भरे भरे हुए काले बादल जो वो होवर कर रहे हैं. होवर करना मीन्स वो फ्लोट करना, टू मूव अराउंड समथिंग. ठीक है, तो जैसे काले बादल है वो फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं हमें. ओवरऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर्स मतलब कि ये कौन सा समय है? रात का समय है. कैसे पता चला? क्योंकि बता रहे हैं यहाँ पे स्टारी स्फीयर रिप्रेजेंट्स स्टारी नाइट्स हियर. ठीक है, रात का टाइम है, बहुत तारों वाली तारे ही तारे दिख रहे हैं यहाँ पे. And the melancholy darkness. Melancholy means sad. Darkness means अंधेरा. तो कहते कि नो एक खाली सा पन लग रहा है मुझे ये ऐसे अंधेरे में. Gently weeps in rainy tears. और ये कैसे रो रहे हैं? बादल जो क्या कर रहे हैं? वो रो रहे हैं. किस? Rainy tears. Tears को क्या बताएगा? जो रेन ड्रॉप्स आते हैं, वो रेन ड्रॉप्स जो हैं वो रेनी tears बन चुके हैं. बादलों के आंसू हैं ये. Oh, what a bliss to press the pillow. Bliss माने क्या होता है? एक खुशी, एक बहुत अजीब सी प्यारी सी खुशी महसूस करना. तो कहते हैं एक ऐसी हैप्पीनेस टू प्रेस द पिलो. ऐसे मौसम में मुझे पिलो प्रेस करके सोना. बस टू ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज चैम्बर मीन्स अ बेडरूम हियर. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. पैटर हियर इट इज अ साउंड. जब कोई साउंड्स को हम शब्दों में बताते हैं. यहाँ पे कौन सा टेक्निक फॉलो करा है पोएट ने? शो नॉट टेल वाला. मतलब बताओ नहीं, उसको दिखाओ, फील कराओ रीडर्स को कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ. सो दैट्स अ टेक्निक ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. विल स्टडी दैट इन लेटर वीडियोज. व्हाट इज दिस टेक्निक इज अबाउट इट. ठीक है, इन डिटेल. सो ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. कहते हैं मेरी छत के ऊपर जैसे ये जो साउंड प्यारा सा एक म्यूजिकल सा साउंड है, पैटर पैटर राउंड जो रेन ड्रॉप्स का आ रहा है, वो बहुत खुशी वाला साउंड है. ये देखो इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा you might have found कि वो काफी दुख सा भरा हुआ लाइन है. एंड जैसे जैसे बाकी के 4 लाइन्स में हम जाते हैं तो वो किस उस चीज को खुशी में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो इट अ बिटर स्वीट मेमोरीज कंबाइंड विद दैट वे हाउ पोएट इज पेनिंग डाउन दिस थिंग. इट्स एन आर्ट कि हम उसी चीज को खुशी में कैसे बदले. रेन जो है, बारिश हर किसी के लिए दुख भी होती है, क्या पता शायद किसी के लिए वो इट्स अ सिग्नेचर, इट्स अ सिंबल ऑफ just painful symbol, and at the same time it is a sign of happiness. So it's in our hand what to choose, and how do we choose, how do we convert this pain into happiness. So that is a very important art. Now coming to the next stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fences into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Let us understand the terms first. Tinkle का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, जैसे शॉर्ट टिंकल टिंकल साउंड रहता है वो. सो ये जो साउंड है ये अगेन किसको एड्रेस कर रहे हैं? रेन को. ये जो बारिश छत पे गिर रही है, यूजुअली क्या होता है, हमारी छत जो है वो कंक्रीट की बनी रहती है, लेकिन अगर टिन की या एस्बेस्टोस की छत रहती है तो वहां पे आवाजें आती हैं रेन ड्रॉप्स की. तो यहाँ पे जो छत है वो ऐसी छत है. ऑन द शिंगल्स. शिंगल्स मीन्स दिस. कैन यू सी दिस?
दिस इज शिंगल्स। और यहाँ पे जैसे अगर रेन ड्रॉप्स गिरेंगे तो आवाज आना शुरू हो जाएगा, वो पैटर पैटर साउंड होगा, तो उसको टिंकल बोला गया है, उसी को पैटर बोला गया है एक बार सेकेंड स्टैंजा में। एंड ऑन द शिंगल्स हैज एन echo in the heart. Echo means repeated sound. You must have studied in your early grades of science, ठीक है बुक। सो कहते वो एक एको क्रिएट कर रहा है हार्ट में, मेरे दिल से इसे बहुत अच्छा सा फीलिंग आ रहा है, ये जो साउंड है ये म्यूजिकल साउंड है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज यहाँ पे किसको बताया जा रहा है कि ऐसे सपने गुनना, कौन से, into busy being and 1000 recollections weave their air threads into woof. Woof मतलब क्या होता है, try and understand this woof. ये can you see this loom? ये जो लूम पे कपड़ा जो है ये क्रिस क्रॉस फैशन में ऐसे बना जाता है थ्रेड्स को, तो ये जो इसको वेफ्ट बोला जाता है, और ये वेफ्ट इज वूफ ईयर जो लूम पे बनाया जाता है। तो कहते हैं कि ना, और ये क्या करें, वीव देयर एयर थ्रेड्स, अभी हवाओं के धागे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो क्या करें, सपने गुनना, यहाँ पे सपने गुन रहे हैं किसी की यादों के, दैट इज एंड 1000 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस मीन्स किसी यादों को रिकलेक्ट करना, टू remember those being nostalgic about the memories here. And as I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे ही मैं ये पैटर पैटर सुन रहा हूँ जो रूफ पे गिर रहे हैं ये साउंड, तो बस मुझे वो लेके जा रही है in the memory lane. Now next, now in the memory comes my mother. Here we get to know कि उसको किसकी यादें आ रही हैं, that is comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. कहते मेरी मेमोरी में, मेरी यादों में कौन आ रहा है, the mother, okay, जो she is no more now, but उसको इसीलिए उसकी यादों में उसकी मम्मी आ रही है। एंड शी यूज्ड इन इयर्स गॉन, कहते जिसे वो पास्ट में मेरा ख्याल रखा करती थी, उसी तरीके से सालों पहले। तो वो जो सीन है, वो जो सालों पहलों का सीन है, वो सीन मुझे अभी फिर से याद आ रहा है, ये रेन की वजह से, ये पेटे पेटे साउंड की वजह से। टू रिकॉर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे पोइट अपने आप को बता रहे हैं कि वो द बिजी बीइंग्स वाज स्लीपिंग हियर। बिजी बीइंग जो हमने अगले स्टैंजा में पढ़ा, बिजी ह्यूमन बीइंग्स, अगेन द पोएट इज एड्रेसिंग टू हिमसेल्फ ओवर हियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ना जैसे ड्रीम कर रहे हैं वैसा। एंड तो जैसे मैं सपने देखता तो मुझे बस वो सोने देती थी, कब तक, बिफोर। एरे इज एन ओल्ड इंग्लिश पोइट ओल्ड पोइट्स में, ओल्ड इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता था एरे। एरे मतलब होता है बिफोर, ठीक है। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, कब तक, मुझे बस सोने देती थी वो, जब तक सूरज उगे तब तक बस टिल डाउन ट्रैक, ठीक है, डे ब्रेक तक बस मुझे वो सोने दिया करती थी। ओ आई फील अ फॉन्ड लुक ऑन मी, हाँ मैं फील कर सकता हूँ उसका प्यारा सा लुक, उसका प्यारा सा एक चेहरा जो मुझे वो देखा करती थी वैसे। एज आई लिसन टू दिस रेफ्रेन, जैसे ही मैं इस चीज को सुन रहा हूँ। लिस्ट अगेन इज एन ओल्ड इंग्लिश, जहाँ लिसन को लिस्ट लिखा जाता था पोम्स में। तो यहाँ पे कहते हैं कि रिफ्रेन मतलब एक कॉरस, एक सॉन्ग हो गया और एक पोम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सॉन्ग है, किसको एड्रेस कर रहे हैं पोइट, यहाँ पे कर रहे हैं पैटर पैटर, द टिंकल साउंड, द पैटर साउंड ऑफ द रूफ, ऑफ द रेन ऑन द रूफ, which is played upon the shingles. Again the shingles are this, you can see these shingles, okay, by the patter of the rain. It's a beautiful poem. Now let us understand the devices used in this poetry. Now let us look at the poem thoroughly. Let us analyze this poetry. Fine. That is, first we shall begin with rhyming scheme. Hover. Let's name it, number it as A. Spheres, B. Darkness, C. Tears, again B. Why? Spheres, tears. Spheres, tears. ये दो rhyme करते हुए दिख रहे हैं, right हमें? Then we have pillow. Bed. Pillow number D. Bed number E. Petter F. बेड हेड, बेड ओवरहेड, ये दो राइम करते हुए, राइट। तो हमने इसको नंबर ई दे देना है। अभी द सेम थिंग यू आर गोइंग टू फॉलो इन नेक्स्ट स्टैंजा एंड द लेटर वन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहता ही है बोर्ड्स में भी, 10th ग्रेड में भी। सो प्लीज बी श्योर अबाउट इट कि आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हो। इट इज वेरी इजी, ठीक है, बट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। देन
Let us understand the poetic devices which are used by the poet over here. Poetic device क्या है यहाँ पे? Figurative devices, जो बहुत बहुत ज़्यादा important होती है, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम यूज़ करते रहते हैं. जैसे कि मैंने बोल दिया मुझे बहुत भूख लगी है, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. So that is literally we know this कि it is not possible. So this is how we speak creatively. That is the difference between a normal language and a figurative language. So first we are going to talk about onomatopoeia. Onomatopoeia इसको कैसे पढ़ेंगे? Onomatopoeia मतलब कि साउंड्स को हमने शब्दों में लिख लेना है. जैसे कि हो गया यहाँ पे patter, tinkle, patter, ये रेन ड्रॉप्स के साउंड है जो पोएट ने शब्दों में लिखे हैं. Then we have the next one is personification. Personification means personify करना, human attributes देना हम किसी और को, human के अलावा किसी को भी हम human attributes देते हैं. जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है melancholy darkness, मतलब darkness sad, ठीक है. So it's personified over here. Then we have recollections. Recollections को कैसे personify किया गया है? Weave their air threads into woof. Weave their air threads into woof. हवा के धागे वो गुन रहे हैं, हवा के धागों से वो गुन रहे हैं वूफ में. क्या? रिकलेक्शंस, यादें. तो इस तरीके से पर्सोनिफाई किया गया है. देन वी हैव एंजैममेंट. एंजैममेंट मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूएशन में हमें स्टैंजा दिख रहा है, कहीं पे कोई मिनी पॉज, सेमी पॉजेस नहीं दिख रहे हैं जो होने चाहिए, ठीक है. तो इसको बोला जाता है एंजैम्बमेंट, जो हमें थरली पूरी स्टैंजा में इस वाले में दिख रहा है. देन वी हैव एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मतलब कि कंसोनेंट साउंड का स्टार्टिंग, शब्द की स्टार्टिंग में कंसोनेंट साउंड होना, उसको बोला जाता है एलिट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया बैटी बटर बटर, फिर बोल दिया मैंने जैसे कि here we have pillow, कहाँ गया? Press the pillow. Then we have next busy being, then darling dreamers, da busy being, ba press the pillow, pa, right? So these are the sounds जो alliteration में जाता है, ठीक है. Then we have transferred appetite. Transferred appetite मतलब क्या होता है? Appetite का meaning होता है adjective. एडजेक्टिव जो है वो ट्रांसफर्ड है, यूज किया गया है एक साथ, लेकिन वो एड्रेस किसी और को कर रहा है. यहाँ पे लिखा गया melancholy darkness. It is addressing the sad people, not the sad darkness, not the melancholy darkness over here. Then we have the next one is dreamy fancies. People who are dreaming, not to the fancies over here. ठीक है. Then we have hyperbole. Hyperbole means हम बढ़ा चढ़ा के चीजों को बोलते हैं, exaggerate करते हैं चीजों को, right? तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबली. यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ पे 1000 ड्रीमी फैंसीज, बट याद किसकी आई? एक ही, दैट इज मम्मा की याद आई. फाइन. देन वी हैव रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है? 1000, जो पूरा पूरा शब्द रिपीट होना. एलिट्रेशन में हमने क्या पढ़ा? कंसोनेंट साउंड रिपीट होना. यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? रेपिटेशन में पूरा शब्द रिपीट होना, ठीक है. तो 1000 ड्रीमी फैंसीज, 1000 रिकलेक्शंस, रिपीट हो रहा है ना वर्ड 1000 यहाँ पे. देन इमेजरी. इमेजरी मीन्स ऐसा टूल है जो रीडर्स के माइंड में तुरंत ही विविड इमेजेस क्रिएट कर लेता है, बहुत ही क्लियर इफेक्टिव इमेजेस क्रिएट करना शुरू करता है, ऐसे शब्दों का यूज करना. जैसे यहाँ किया है पोएट ने यूज स्टारी स्फीयर्स, यानी आसमान कैसा भरा हुआ, पूरा का पूरा जैसे तारों की चद्दर छाई हुई है, राइट, पिछाई हुई है, दैट इज स्टारी स्फीयर्स. देन वी हैव मेलंकॉली डार्कनेस, rainy tears. These are the imagery which we can imagine vividly these things. Then assonance. Assonance मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमें वोवेल का साउंड prominently यूज किया गया हो, उसको बोला जाता है assonance. जैसे कि of the soft rain overhead, O-O-A-I. Then we have airy, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me. O-O-O, right? Airy, she left. E का sound prominently used है यहाँ पे. Fine. So we are done till here. Then the next, we can now understand that rain brings the old memories, right? But not forgetting to make space for the new memories also. We need to make space for that. So not to dwell on the old things, which is let bygones be bygones. Do not dwell on that, right? And make space for the new ones. It's a beautiful poetry explained, written by Coach Skinny.
and explained by me right now. So if you like the explanation, do not forget to like, share, subscribe and comment. Learnify me. Okay. So bye bye. Have a good day everyone.